Good morning, students. Hope you all are good and staying at your home safely. So, students, like day before yesterday on Saturday, I had given you some exercises to do in the class, which you all have done it very correctly, and some of the students had not. The answers was not correct, but I have given the right answer. So we had finished present tense, means the four tenses in the present tense, like simple present tense, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. I have told all the things in present tense, like the where we use simple present tense, and the rules for the affirmative sentences, for negative, and for exclamative for integrative sentences. Now today I will be starting my chapter with the past tense. So as I had finished my present tense, today I will be teaching you all the past tense, the rules and regulations. And past tense include the simple past tense and past continuous. As past tense is also called as simple past tense or past indefinite tense. So this tense is used in the following ways: to indicate an action that happened in the past and to regret completed actions. It is used often in narrative or recounts, like we closed the shop at 8 p.m. Second, she met me last year. I visited the Taj Mahal 3 months ago. So past tense here indicate an action that had happened in the past already, मतलब कि जो कि already complete हो चुका है action और उसके बारे में हम बता रहे हैं. So it is often used in the recounts or narrative, मतलब कि हम उसको narrate करते हैं या बताते हैं कि ये काम हो चुका है. Like the example says, she met me last year. वो मुझसे मिल चुकी है, वो already मुझसे मिल चुकी है. That's why I'm telling today that she met me last year. I visited the Taj Mahal 3 months ago. मतलब कि मैं 3 महीने पहले उससे मिल चुका हूँ, या ताज महल visit कर चुका हूँ. Now the second one, to indicate past habit or repeated event that are now over. So जैसे आपका present tense था, to indicate the habitual actions, the truth, the facts, वैसे ही आपका past tense होता है to indicate past habit or repeated events. Like in those days my mother gave me some pocket money every day. सो ही इज़ टेलिंग दैट जब पुराने ज़माने में जब वो दिन थे तो क्या थे, माई मदर गिव मी सम पॉकेट मनी एवरी डे. वो मुझे रोज़ कुछ ना कुछ पॉकेट मनी दिया करती थी. आई ऑलवेज रोड अ बाइक टू स्कूल व्हेन आई वाज यंग. सो ही वाज टेलिंग दैट व्हेन ही वाज यंग, मतलब कि अभी या तो वो ओल्ड होगा, ओल्ड एज के होंगे, या तो फिर वो यंग से थोड़े और ओल्ड एज के बीच में जो उनका एज होगा वो होगा. एंड दैट्स व्हाई ही इज़ टेलिंग एडल्ट में आएंगे. सो दैट्स व्हाई ही इज टेलिंग आई ऑलवेज रोड अ बाइक टू स्कूल व्हेन आई वाज यंग. नाउ द थर्ड वन, द हैबिचुअल पास्ट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग टू. हम लोग बोलते हैं ना, आई यूज्ड टू डू दिस, आई यूज्ड टू वॉक देयर, आई यूज्ड टू गो देयर. मैं वहाँ पर जाती थी या मैं वहाँ पर जाके वॉक करती थी. तो यूज टू हम लोग हमेशा पास्ट में यूज़ करते हैं. लाइक शी यूज टू ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, मतलब कि वो हमेशा सुबह मॉर्निंग में वो टी पीना पसंद करती है. माई ग्रैंड फादर यूज टू रीड अ फ्यू चैप्टर ऑफ द गीता एवरी डे, मतलब कि मेरे जो ग्रैंड फादर हैं वो गीता का जो पार्ट है उसको वो डेली पढ़ते हैं. सो दैट इज़ द हैबिचुअल पास्ट कैन बी एक्सप्रेस बाय यूजिंग यूज टू. नाउ द फोर्थ वन, sometimes this tense is used without an adverb of a time. In such cases, the time may be either implied or indicated by the context. Like I learned Punjabi in Chandigarh. So here this tense is used without an adverb of time. अब वो कब था पंजाब में, कैसे था, we don't know. So in such cases the time may be either implied or indicated by the context. And here the context is that he learned Punjabi in चंडीगढ़. अब वो चंडीगढ़ में कब था, कैसे था, वी डोंट नो. सो विदाउट यूजिंग एन एडवर्ब ऑफ टाइम वी यूज we sometimes use this tense. Now the last one is to indicate another action which happened in the middle of a longer action. So
So the light went out while I was watching my favorite TV serial. So to indicate another action which happened in the middle of a longer action means when the light went out while I was watching my favorite TV serial. So he was watching when he was watching his favorite TV serial, the light was gone. So to indicate another action which happened in the middle of a longer action, we use the past tense. Now we will go with the rules in the affirmative cases and the negative and interrogative. So in the rules for affirmative cases, here students, as you all know that the basic rule for your past tense is simple past tense is subject plus verb plus this your object, and here the second form of verb we use. So the rules for affirmative sentences, subject plus second form of verb plus object. So I played football in the ground. She sang a song in the party. Now same there is no changes as is और प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में था वैसे यहाँ पर भी है. जैसे रूल्स फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट. आई डिड नॉट अटेंड द फंक्शन. दे डिड नॉट वॉच टेलीविजन. So that is for the negative sentences. Now for the interrogative sentences, did plus subject plus first form of verb. Like did you play a game? Why did she abuse her friend? So question word plus did plus subject plus first form of verb. So in this case, students, you all have gone the three cases with the sentences, like as rule for affirmative sentences, negative sentences and for इंटोग्रेटिव सेंटेंसेस. देयर इज़ नो चेंजेस. लाइक आपका बस उसमें क्या है, वर्ब की फॉर्म चेंजेस होती है. अदरवाइज इन द प्रेजेंट टेंस, इन द फ्यूचर टेंस और इन द पास्ट नथिंग इज चेंज. लाइक सब्जेक्ट चेंज आपका वो तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा. बट इफ वी गो फॉर अ बेसिक रूल, द सब्जेक्ट इज देयर, द वर्ब इज देयर, द वर्ब इज देयर, ओनली द वर्ब फॉर्म्स आर चेंज. लाइक इफ वी गो विद द कॉन्टिन्यूस, तो वहाँ पर इज एम आर लगता है, तो कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाता है, वॉज वर लग जाएगा. because already that work had done or had like it was always it was already done in the past. So that's why we use was and were in continuous. Now we will go with the continuous. This tense is used in the following ways: to indicate an action that was happening at some time in the past and the time of action may or may not be indicated. मतलब कि कोई काम ऐसा शुरू हुआ होगा, वो अभी तक चल रहा है, या फिर वो अभी तक उसका जो टाइम है वो हमें नहीं पता है. दैट वॉज नॉट इंडिकेटेड. वी वर वॉचिंग टीवी इन द होल इवनिंग, मतलब कि हम लोग पूरी शाम टीवी देखते रहे. सो वी वर वॉचिंग टीवी. नाउ सी हेयर वर इज़ यूज. वॉचिंग में आपका ING यूज़ हो गया, जैसे आपका प्रेजेंट टेंस में होता है. कॉन्टिन्यूस के फॉर्म में वेदर इट्स अ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, वी यूज़ वर्ब प्लस ING. एंड हेयर वर इज देयर, वी आर देयर, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, वर. सो वी वर वॉचिंग टीवी द होल इवनिंग. नाउ द सेकेंड पार्ट, यूज्ड विथ ऑलवेज, कंटिन्यूअली एक्सेट्रा फॉर परसिस्टेंट हैबिट्स इन द पास्ट. लाइक ही वॉज ऑलवेज सल्किंग. सो अब क्या यहाँ पर, जहाँ पर हम लोग ऑलवेज, कंटिन्यूअली एक्सेट्रा फॉर परसिस्टेंट हैबिट्स यूज़ होता है, वहाँ पर हम लोग इसको यूज़ करते हैं. नाउ द थर्ड वन, द पास्ट कंटिन्यूअस इज ऑल्सो यूज फॉर एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड और एट अ पीरियड ऑफ टाइम इन द past. Means the past continuous is also used for an action that was going on during a given period. मतलब कि जो पहले से काम चल रहा होगा और at a period of time in the past, या फिर कोई period of a time denote या indicate किया गया होगा past में. Like for example, while Rohan was filling in the hole, his dog was digging another. मतलब कि रोहन इधर फिल कर रहा था होल को, उधर क्या कर रहा था, डॉग was also digging the another hole. He was also making a another hole. So this is what the past continuous is also used for an action that was going on during a given period of a time or at a period of a time in the past. Now we will go with the rules for affirmative sentences. The first one is singular subject plus was plus first form of verb plus ING plus object. As I told you, plural subject we use were plus first form of verb plus ING. So she was driving her car, that was a singular subject. Now they were making a noise, they.
Rules for negative sentences. As you all know that singular subject was plus not plus first form of verb plus ing. Now the second one is plural subject plus verb plus not plus first form of verb plus ing. So she was not singing a song, they were not eating mangoes. So here she was not singing a song, they were not eating mangoes. As you all know that she is singular and plural is for they. Now rules for integrative sentences. Was, were plus subject plus first form of verb plus ing, or question word plus first was, were plus subject plus first form of verb plus ing. Like, why was the blind boy crying? When were the milkman milking the cow? Yeah, were you eating a mango? So all these comes in your integrative sentences. So today I had taken your past tense, that is simple past tense. Here I had explain you the that where the simple past this tense is used in the in the 5 ways, and that I have told you. Then I have told you about the rules for affirmative sentences, negative sentences and integrative sentences for the past tense. And then again I have told you the past continuous tense, where I had told you the use of in the following ways, that is the 3 ways. And that the rules for the continuous tense also past continuous in the rules for affirmative sentences, negative sentences and for the integrative sentences. So student, just go through this and make the notes of these tenses, so that it will be very helpful and benefit for you to read out if you are get in a doubt when you are solving any question, so that you can open your copy and you can go through the your all these notes. So start making the notes of the present tense as well as the past tense. And the exercises which I have given you, you just note it down in rough copy, don't note it down in fair copy. Only make the notes in your fair copy of your grammar. Like I have already told you the letter, then your article, then I have gone through the article के बाद मैंने शायद डायरी एंट्री कराई है. डायरी एंट्री के बाद रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, देन डायरी एंट्री, देन योर मॉडल्स, दैट इज़ वर्ब का भी मैंने छोटा दिया है. अगर आपने छोटा सा मैंने वीडियो में आपको शेयर किया है. इफ़ यू हैड मेड द नोट्स ऑफ वर्ब ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो गुड. इफ़ यू हैव नॉट मेड इट, देन इट्स ओके, डोंट मेड इट कि आपको बनाना ही बनाना है. बट प्लीज़ मेक द प्रॉपर नोट्स ऑफ 10th चैप्टर. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू बेटा, कि अगर आपके पास सारे वर्क रहेंगे तो आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हो. कभी भी आप यू कैन गो थ्रू दिस द नोट्स विच यू आर विच आई एम गिविंग यू थ्रू दिस बुक एंड यू आर मेकिंग इट. जब भी कभी कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हो. आप अपनी बुक कॉपी ओपन करके देख सकते हो कि कहाँ पर कौन सा रूल्स यूज़ हो रहा है. सो इट विल बी वेरी बेनिफिट फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हेन विच वी आर गोइंग टू गिव इट. So tomorrow I will be taking up the class for the past tense again, that is past perfect and past perfect continuous tense. Okay students, now till then take care and bye bye.